Vaibhav, you just said that, I would just pick up three things which from you, whatever you just said. One is that focus on the process, not on the destination, focus on the journey. So that's a very important lesson, not only as a UPSC aspirant, but as a human being, we should learn to be a part of the journey, to enjoy the journey rather than focusing too much about destination. The second thing which I picked up is that if you pick up your career, if you build up your career, what your heart says, आपका जोश, जनून और जज्बा जो कहता है, तो उस पर हर चीजें फिर आसान होती चली जाती हैं. तीसरी चीज जो मैंने आपकी अभी बात से पिकअप की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. Contrary to the normal approach which I have when I speak to the parents and when I speak to the students की यूपीएससी को क्रैक करने के लिए सालों साल की मेहनत चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. आपने जैसा कहा कि बीटेक कंप्लीट करने के बाद तक भी आपने तैयारी करने की तो बात छोड़िए, आप फॉर्म अप नहीं थे. आपने जब सैमसंग में ज्वाइन किया तो उसके बाद आपने सोचा और उसके बाद आपने इसको शॉर्टलिस्ट किया और आपने अपना माइंड मेकअप किया. तो ऐसा नहीं है कि 5-6, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेट्स में जब जाता हूं तो मैं ऐसे भी पेरेंट्स से मिलता हूं जो चाहते हैं कि 8th 9th 10th क्लास से ही बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दे. सो कॉन्ट्रैरी टू दैट, आप 2 साल आप कह रहे हैं कि बहुत सफिशिएंट पीरियड है अपने आप में अगर आप तैयारी करना शुरू करें. तो एक चीज और मुझे बताइए वैभव, बिफोर वी एक्चुअली गो डीप इनटू द इंटरव्यू, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग दिस रिजल्ट दिस टाइम? Very honestly, sir, I was not expecting any kind of result. I knew that my papers had gone well, and that was the only thing that I knew. I did not know कि वो papers से कितना result materialize होगा. बस मुझे था कि कुछ भी result आता है, I would be gladly accepting that and then move forward, whatever the result. So does that mean that you were ready if you were unsuccessful in the second attempt, you were ready to give the third attempt? No, sir. I had made up my mind that I'll switch back to being a software engineer in the short term, and then I'll decide what to do next. Wonderful. एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ वैभव, I see when I speak to a lot of UPSC toppers in the last 10-15 years, I've interacted and interviewed hundreds and hundreds of toppers at different competitive examinations. Specifically coming about UPSC, बहुत सारे जब मैं टॉपर से बात करता हूँ, everybody wants to go into IAS. Why did you choose IFS? Sir, again, because that was something that interested me, and that is what drove me to this examination. मेरी फैमिली से कोई सिविल सर्विस में नहीं है, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का ही मुझे पता नहीं था until I reached college. I stumbled upon Indian Foreign Service as a good career option because I like traveling. I play strategy video games, and when I was very young, my grandfather used to tell me stories about World War. So I'm generally interested in world history, international politics. So that is what drove me to international, relations, and then Indian Foreign Service was the natural choice. IAS तो सोचा ही नहीं कभी.